So, guys, after studying DSA, we have a really good guest today who can help us understand more about how technology works and how his experience has changed so many companies' futures. First, please have a look at his LinkedIn profile. It's too long to scroll and get to know what all things he does. And he's a wanderlust like us. Like he has first he's working in Delhi, then he went to Mumbai, then he worked in Washington DC, and now he's working currently in Bangalore as a vice president in Vista. So he's known for bootstrapping. Like he creates the companies of bootstrapping. He also is good in leadership and like we are learning programming languages. He's too good in programming languages. His backend is really good. Like he knows no SQL, no SQL, SQL, Java. So any questions to that also, he's open for that. Rest I would tell sir to take over. It's lovely to be here. Before before we start, right? It's important to understand a couple of things about me, right? I can just put it on the first slide. Yeah. So what you see is me here. Okay. It's roughly just to give you a personal story so that you understand. I was hearing outside a lot. I was trying to understand that okay, we are used to traditional way of working where we give exams, we join a graduate program. I mean, you all are pretty well aware kids here, right? You know how system works, and you are in a different system. It's important for you to understand some of the story behind me, the personal story of me, so that you don't lose hope in the system and you think a little big beyond just trying to seek a job, etc. Right? So, what's in the slides we will talk. Don't worry. But I think so. The story behind this is important. And this is the reason why when Nikita told me to connect, and I was trying to understand. Maybe see, first of all, nobody in IIT is going to call me unless I sponsor a hackathon there, which I did for IIT Bombay. And then only they called me 2 days of hackathon. Otherwise, nobody is going to call me there. They have other big things to do. The point is that that is not India. That's a part of India. We are the largest populous country in the world, and that's an iota in the ocean. What we are dealing with, that's not our political, that's not our population dividend. Our young generation has a dividend of next 15, 20 years, which is what is going to make the country progress. Uske baad se there will be age decline, and then we will face problems what Japan is facing or Europe is facing, where people start to age, society changes, they have a very different look towards the overall journey. So it's important that the journey behind me gets conveyed to people like you here, which obviously I can't write in the slide, and neither he will be able to pick from the LinkedIn. It's just difficult to describe, right? Uh, so I come from a very strong uh, family academic background. Like my father was a scientist, my mother was a teacher. Almost everybody in my family is who's who types. Okay, I myself studied at Jaipuria Public School in Kanpur, which is one of the top schools in the state and country. And my batchmates are like all AIR rankers who are in various places. My 10th was 92%. I was in the top five and I topped in the history, civics, geography across the country. My 12th was around 88, 89%. I basically messed up my chemistry paper, literally messed it up. I just got one thermodynamics ka question wrong and it just put me from one part to the other one, and therefore वो percentage नीचे चला गया. And why I'm telling you that all what made my percentage is from very unexpected things. So I have this computer science background. My class 9th computer science score was 43 out of 100. That's when my mom came in to my teacher and said, "Boss, we can't screw up his grades. Should we shift him to economics?"
She said, no, 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 no. We will work through it. We'll see that he gets a grasp of it. So, number one, computer science is not my first love. I have trained to be doing what I'm doing today. So that's lesson number one. You can train to be anything as long as you have got willpower to do it. Okay, that's an important aspect. That 43, I ended up scoring around 92 in 12th. My project was one of the top projects, no problem. And then ultimately, this has given me the job as well. And I pay my bills because I learned to be computer scientist, right? But that was not my starting ambition any which ways to get into it. The school, like, okay, computer science was not something which was going to make me. Then this was around 96. Okay, I don't know how much of history you know, but in 96 I gave all of these exams. I mean, my percentage was good enough. I got honors chemistry in Hindu. Getting honors chemistry in Hindu at those times was very difficult because even today Hindu is second ranked in the country. It was easy peasy. I went in, my name was there. I had just like walk in, just pay, and it's honors chemistry. But I did not take it up because I was walking through the corridors. There was one job written for JK Chemicals which said that you will be paid 3,000 or 4,000 per month. It's like, what? Honors chemistry from Hindu Delhi University, and then I'm going to do this 3,000 का job. ये तो नहीं चलेगा, मुझे तो engineer बनना चाहिए. This is where when you reflect back on life, you come to realize कि हमारा vision short रहता है. तो ये जो interactions है ना, use them to increase your aperture, जिसे कहते हैं, physics में पढ़ा होगा. Aperture बढ़ाने की कोशिश करो इस level पे, because you guys have and girls have more access to information and ability to transform and much more smarter than the previous generations. My kid is 13-year-old and I can bet you he would be more even smarter than you or the kids of his. तो हर जनरेशन में इम्प्रूवमेंट होता है. दैट्स लाइक डीएनए, राइट? मैं इतना नहीं रियलाइज कर पाया कि वो ऑनर्स केमिस्ट्री इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. दैट कैंपस ऑफर्स यू मेनी अदर थिंग्स, राइट? यू डू ऑनर्स केमिस्ट्री, यू हैव लाइक योर फ्रेंड्स, यू माइट डू आईएम, कैट की तैयारी करते हैं आधे लोग वहां पर, और आधे लोग यूपीएससी करते हैं. जो बचे हुए हैं वो कहीं पर अप्लाई करते हैं फॉरेन में एमएस के लिए, और उनको स्कॉलरशिप मिली जाती है बिकॉज हिंदू का कोई भी या स्टीफेंस का प्रोफेसर रेकमेंड करेगा, कोई मना थोड़े करने वाला है. बट मेरा विजन ही नहीं था. तो अपने बारे में थोड़ा विजन होना जरूरी. यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू बी, और वो तुम्हें कोई भी नहीं बता पाएगा, भले तुम आईआईटी में पढ़ रहे होते या यहाँ पढ़ रहे होते. नोबडी इज गोना. यू नीड टू नो योर कॉलिंग. सो आई लेफ्ट दैट. 3 महीने नहीं, let me take second attempt on engineering because that's what parents wanted. My father didn't want because any which ways he was like from chemistry, so it was fine. I gave exam again in 1997. 96 I cleared my 12th. I gave 97. As much as you might know the history about it, 97 was the year of leak in this country. I'm very happy that from 97 to 2024, it has taken godmother years for government to figure out that people should be imprisoned for leaking papers. So I was happy to see the bill come in and get passed. I don't know how much time it will take for implementation. And I was also happy about the coaching bill which has come. Again, I don't know how much time it will take for implementation. I think so both of those things are doing us more harm than anything in life can do. In 97, there was practically no paper which didn't come in the category of leak. Starting from IIT to RIDKI to MNRC, every paper. I got through the first round, but then when they did the second attempt, all that got cancelled. I didn't get through. So my father basically ported me to this. This is how there is a calling with Maharashtra. I was keep telling them this is my second home actually. So you all would know that like Karnataka, Maharashtra has also got all of these colleges, right? So again, not understanding where you are going. Everything is affiliated to Mumbai University. I went for the counseling. I was in Sardar Patel College in Bhavan's campus.
giving the counseling, and they were giving me civil engineering, which was right down in the middle of this town, Mumbai, which would have guaranteed you any job because SPC is like top college. Yeah. Again, I didn't see that. I saw electrical engineering, this computer engineering thing, and it's affiliated to Mumbai University in some private college in Konkan region. So I took a overnight bus with my father. My father left me there and said, "Boss, अभी तुम 4 साल बाद ही आना, अभी क्या ही करेंगे? We can't be wasting time, right?" तो starting from 92%, वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरा सारा ईगो, कॉन्फिडेंस सब खत्म हो चुका था. There was like nothing left. And I had given one more exam for Kanpur University, which was my hometown. So there, that exam's result was like little, like in the winter session, like winter October or something. तो तब तक तो अगस्त में तो डाल चुके थे. तो like after that my father's attitude was कि बस अब जो चीज हो गई हम उसको revisit नहीं करेंगे. तो इज लाइक रिजल्ट आ गया, पीपल आर टेलिंग हिम कि बस अच्छा वो भी हम बॉम्बे नहीं गए, हम कर्नाटका नहीं गए, हम बॉम्बे में आके कहाँ फंस के पता नहीं कहाँ चले गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने. उस समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब क्या समझ में आती थी कि वो जो हाई टेंशन वायर पे आदमी चढ़ता है ना, सो समझ लो कि एस्पिरेशन तुम्हें कहां तक ले जा सकता है और लाइफ तुम्हारी कितनी टर्न्स ले सकती है जो बेसिकली तुम्हारा सारा जूस निकाल देगी. सो इट्स लाइक जस्ट डिफिकल्ट, राइट? सो एनी विच वेज, तो उन्होंने, मेरे कोलिग्स, मेरे फादर के जो थे, उन्होंने बोला भाई जस्ट देख लो एक बार, अगर उसका नाम है तो व्हाई डोंट यू कॉल हिम बैक. तो 3 दिन बाद उन्होंने देखा रिजल्ट निकलने का, तो वो भी उन्होंने नहीं देखा, मेरी मदर ने देखा कि नहीं नहीं नाम तो है, 125th रैंक है और गवर्नमेंट सीट है, विच इज 10,000 रुपीज पर ईयर था उस समय, एंड कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा. सो दैट्स हाउ आफ्टर लूजिंग 10 kgs, लिटरली रात की एक ट्रेन पकड़ के मैं आया था. उन्होंने मेरी सर्टिफिकेट सब रख लिए थे. सो देयर वाज वन some god sent godmother teacher there who for some reason had some level of affinity and affection कि भाई ये बंदा तो त्रस्त होके कहीं से आया है, इसका सर्टिफिकेट किसी तरीके से ट्रस्टी से निकलवा के इसको दे देते हैं, क्योंकि 10-12 सबका सर्टिफिकेट वो रखवा लेते हैं अंदर, कोई देता नहीं है, और डिपॉजिट भी रखवा लेते हैं, वो भी इतनी आसानी से मिलता नहीं है. तो वह कुछ करा के ट्रेन पकड़ के वापस अपना बैग खींचते हुए, अपनी पैंट पकड़े हुए, बिकॉज वहां तो कोंकण में तो इट्स लाइक रत्नागिरी में इतना पानी गिरता है कि तुम ऑरेंज हो जाओगे, बिकॉज सारा सॉइल ऑरेंज होता है वहां पर. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम दैट रीजन, बट इफ यू आर, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो once I came back, I joined CSGM, Kanpur University, Faculty of Engineering, Institute of Engineering and Technology, and I was the second batch of that. तो आप लोग ये जो AC में बैठे हो ना, जितना बड़ा कैंपस है ना, उस कैंपस का वो आधा भी नहीं था उस कैंपस के अंदर. था तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस में, विच वॉज गुड, बट कैंपस के अंदर वो सिर्फ एक जगह थी जहां पर हमको पढ़ाया जा रहा था, और वो इनक्यूबेटेड था IIT कानपुर से, बिकॉज कानपुर यूनिवर्सिटी IIT कानपुर इज लाइक प्रीटी क्लोज बाय. तो उनके प्रोफेसर सुबह 6 बजे आते थे पढ़ाने हम लोगों को, बिकॉज स्टाफ तो था नहीं, एंड दैट्स हाउ आई वाज द सेकंड बैच. सो यहाँ पर जो आपको प्रिविलेज यहाँ या दूसरे बच्चों को भी मिलती है, राइट, कि ये सब सेशन वेशन अरेंज हो रहा है, ये सब तो तुम भूल जाओ, तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था. वहां तो ये था कि भाई मैं वहां पहुंचा तो द ओनली गुड पार्ट वाज कि मेरे जैसे और भी थे जिनका लीक की वजह से हालत पतली हो गई. फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा था, सेकंड में गड़बड़ हो गया, बिकॉज जो भी व्हाट एवर इट इज, राइट. स्मार्ट पीपल, दे आर ऑल्सो गुड, डूइंग गुड इन देयर लाइफ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. अल्टीमेटली एवरीबडी डज गुड इन द लाइफ. सब लोग एक ही फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे, सिर्फ जैसे मैराथन में होता है ना, यूनिट किपचोगे 2 घंटे 1 मिनट में खत्म करता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग खत्म नहीं करते, बाकी लोग भी खत्म करते हैं, वो सिर्फ फर्स्ट आता है.
बाकी लोग भी फिनिश लाइन पे आते हैं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो अल्टीमेटली वहां पर तो ये पूछने के लिए भी नहीं था कि जॉब कहाँ से आएगी. लाइक फॉरगेट अबाउट इट, लाइक नोबडी इज गोना, लाइक सेकंड बैच बॉस. किसी भी इंस्टीट्यूशन के सेकंड फर्स्ट बैचेस, और वो भी कानपुर जैसी जगह पे, इट्स जस्ट टू हार्ड. So I went through that public sector route. I got like around gate में around 90% etc. तो MTech वाला route नहीं लेके public private sector. अल्टीमेटली जितना भी स्टडीज किया था तो उससे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ऑल आई गॉट DRDO साइंटिस्ट, BARC साइंटिस्ट, जितने भी एग्जाम थे वो क्लियर करने का एक पैटर्न होता है. वंस यू गेट इट, प्रॉब्लम सॉल्विंग यू गॉट इट. बट अल्टीमेटली आई जॉइन TCS, और TCS के 5 राउंड मैं रोज सुबह गोमती से एक्सप्रेस से जाता था. whoever is from this UP region, they will understand what I'm saying. एंड कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, वो सुबह ऐसे फोन करते थे उस समय की लैंडलाइन पे कि आप कल सुबह आ जाइए इंटरव्यू देने सी का, अभी आप परसों आ जाइए बिहेवियर देने, नरसों आ जाइए साइकोमेट्रिक देने. तो ऐसे रैंडमली अपना कॉल कर करके करते थे वो. एंड देन इज लाइक आप ट्रेन पकड़ के भाग रहे हैं. दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट जॉब, राइट? नाउ दैट्स इजी फॉर मेनी पीपल नाउअडेज, and at that time also it was easy for many people. The story which I am trying to tell you is that it really does not matter how, what happened, where you end up doing. The end result matters. What route you took and road you took. I might take 2 hours, you might take 3 hours, we will reach the same point. All of you will be as successful as any one of us. Depends on what you define success for yourself. और अगर आपका सक्सेस और एस्पिरेशन बहुत हाई है तो आपकी मेहनत भी उतनी होनी चाहिए. उसका IIT या ITM या IET से कोई लेना देना नहीं. Somebody who can be very smart, clear IIT, can be the laziest person in that institution doing nothing. And I can guarantee you, with the worst attitude at work, बिकॉज उनको लगता है कि वो प्रिविलेज लेके आए. वैसा होता नहीं है. लाइफ में किसी की प्रिविलेज नहीं होती, बिकॉज आप एक बार जॉब में आ जाते हैं तो उसके बाद हम पूछना बंद कर देते हैं. और जनरली आजकल जॉब में अप्लाई करते समय भी पूछना बंद कर देते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या है क्या नहीं है. व्हाट मैटर्स इज व्हाट मेक्स यू एज अ पर्सन. व्हाट मैटर्स इज दैट आर यू डिफरेंट देन अदर्स एंड व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं या बाहर इंस्टीट्यूशन के स्पेंड करते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू, राइट? व्हाट्स दैट स्किल इन यू विच इज वेरी गुड, यूनिक, विल मेक यू स्टैंड आउट. क्योंकि आप लोग सब कोर्स तो सेम ही कर रहे हो, राइट? तो इसमें क्या स्टैंड आउट होना है? इसमें तो कुछ भी स्टैंड आउट होने के लिए नहीं है. स्टैंड आउट आपकी यूनिकनेस, पर्सनालिटी, आपका सेलिंग पॉइंट क्या है. अगर आपको 30 सेकंड दिया जाता है टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, हाउ आर यू गोइंग टू सेल योर सेल्फ लाइक अ प्रोडक्ट? यू नीड टू फोकस ऑन दैट, राइट? और it is not necessary that you follow the traditional route of doing things, but it is necessary to end कि आप जाना कहाँ चाहते हैं. रैंडमली कुछ करोगे, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, ये भी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो इट्स लाइक स्प्रेडिंग पीनट बटर. थोड़ा इस पे भी लगाया, थोड़ा वहां भी लगाया, थोड़ा, ऐसा चलता नहीं है. यू नीड टू बी गुड एट समथिंग. अनलेस यू आर नॉट गुड एट वन थिंग, it is very difficult to really make yourself stand out. तो आपकी प्राइमरी स्किल्स क्या हैं और आपकी सेकेंडरी स्किल्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? सो that's the important. there is a life lesson in it. प्रेजेंटेशन में तो लाइफ लेसन बताना मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ कॉन्वर्सेशन ओनली विच कैन इन्वोक इट. एंड मे बी सम ऑफ यू माइट बी एबल टू रिलेट with you, how your career or how your childhood days have come through schooling and what you have faced and ups and downs etc, right? It's very difficult academically बहुत अच्छे होना
इस कंट्री में एकेडमिकली बहुत अच्छा कोई भी किसी भी फैमिली में होगा ना, किसी भी टाइप का, आप में से या मेरे में से, वहां की इनेट सोसाइटल एक्सपेक्टेशन यही है कि आप आईआईटी ही जाओगे, यही एक्सपेक्टेशन रहती है. बट दैट्स नॉट एक्चुअली व्हाट लाइफ ऑलवेज हैज फॉर यू, बिकॉज इट्स सप्लाई एंड डिमांड. इतने ना तो आईआईटी हैं, एंड व्हेन आई से ना तो आईआईटी है, मतलब जितने आईआईटी और आईआईएम खुले हैं सब में जाओगे, कुछ की तो हालत अभी इंक्यूबेशन में है, उनका तो कुछ आगे पीछे का भी पता नहीं है. अभी आईआईटी धारवाड़ हुबाली के आगे है कर्नाटका में. मैं टैप में गया था तो उससे भी और आगे जाना है बैंगलोर में. तो इट्स लाइक मुझे मालूम भी नहीं कि वो कहाँ पर है, वहां पर क्यों जाएंगे हम किसी को लेने, फॉर दैट मैटर अगर सिटी में ही 4 कॉलेज हैं तो, राइट. तो आईआईटी तो आज भी वही 4-5 हैं. इट एंड्स अप विद गुवाहाटी ओनली. कोई और आईआईटी का नाम विल टेक सम टाइम टू, सॉरी, हाँ आईआईटी तो बहुत है लेकिन नाम बहुत कम आते हैं. सो पॉइंट ये है कि आईआईटी होने से कुछ नहीं होता, लेकिन लोग टैग के लिए जाते हैं. टैग तुम्हें ज्यादा देर तक कहीं सस्टेन नहीं करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारी स्किल्स ही रहेंगी जो तुम्हारी मैटर करती है. एंड वो अगर तुमने अपने बारे में, यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट यू आर, हु यू आर, then X versus Y, then it's a very difficult value proposition, right? So it's important that I tell you that story so that you have a real picture of me, and you don't look at this picture of how I've traversed through the system and made myself whatever I am. मेरे लिए यही सक्सेस की डेफिनेशन है, और that's fine. I don't have, like, I don't want to be an entrepreneur etc. ये सब मेरी डेफिनेशन नहीं है. जिसकी होगी, they should see that they basically work towards that kind of definition. Yeah. So it's important कि everybody has a place in society and you can make through the system as long as you are able to find how to make through the system and you get the right help at the right time from the people, which means तुम्हारा network, relationships, knowing the right people is important. If you don't know the right people, if you don't know the network, if you don't know where to apply, how to apply, तुम्हारा research अगर strong नहीं है, तो तुम किसी भी कंपनी में सिर्फ रैंडमली नहीं अप्लाई कर सकते. तुमको थोड़ा सा अपना सेक्टोरल स्टडी करना जरूरी है, दैट वेयर योर काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड. एंड आजकल दैट्स वेरी डिफरेंट. इट इज नॉट सिमिलर कि वो इन्फोसिस टीसीएस इज द ओनली प्लेस वेयर टेक्नोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड. या सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. इज गूगल. सो इंटरेस्टिंग रहता है, लोग क्या करना शुरू करते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, राइट. एंड दीज गाइज एक्चुअली कोड टुडे ऑल्सो. सो जेमिनी के पीछे he has been coding and reviewing the code a lot, not Sundar Pichai. What Sundar Pichai does is a very different skill than what the people who founded this company do. Yeah. Next slide. So this is a little bit of about my company. So Simpress, where I work, is around $3 billion in revenue, around 30-year-old in business. We are in the space of mass customization. So जब भी आपका कॉलेज फेस्ट होता है, या जैसे इसने लेट्स अपग्रेड की जैकेट पहनी है, स्पर्श ने पहनी हुई है, या तुमने टी शर्ट पहनी हुई है, तो वी आर इन दिस बिजनेस ऑफ मास कस्टमाइजेशन, बिजनेस कार्ड्स, मार्केटिंग मटेरियल एक्सेट्रा, एंड ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स बिलोंग टू अस. सो you name a country in the world, we have a brand across Europe, US, India. 17 businesses worth $3 billion. In my first stint, I worked here for almost 8-9 years, and uske baad I went to Tesco Technology and then came back again. So I've been working here for last 2.5 years, and now instead of working in the platform teams of Simpress, I work for its largest brand, which is Vista. So 3 billion mein Vista is around $1.7 billion. I am part of the Vista engineering leadership team, and in the Vista engineering, we have around 796 people. Around roughly 800 people are there across US, Europe, and India. And of that 800 people, I manage around 150 people across US, Europe, and India. India being the smallest in my portfolio. The maximum people I manage is in Europe, and I work on
generative AI, content, and studio engineering. Before that, I used to work on other platform engineering stacks. I don't get paid to code, I get paid to lead. So, coding was when I started 8 9 years, and then after that, I did my B school at SPGen to chalk out a path because पहली वाली degree is always not enough, and उसका reputation needed to have a brand name. So, I went for SPGen, completed my B school there, and that's how my journey got crafted. And I did B school because I wanted to understand. I thought that communication, technology understanding, and business acumen will be the future. So I wanted to understand how finance works, how marketing works, so that when I'm on the C table with CXOs, I'm able to see that I'm able to talk in their language, understand the problem, and then as a technologist, also able to translate it. So I, at that time, thought that I will not run after, like, once you have built technology, तो आप घूम रहे हैं सब जगह कि भाई कोई प्रॉब्लम दे दो सॉल्व करने के लिए. Rather than that, I came to realization that if there is a problem, let's sit and see how technology will solve it. Is the future, and it will be a good career path rather than anything else. So vertically, I started to go on from that point of view and increase myself. Yeah. तो वैसा हिसाब किताब था. All of these are like big and small brands, and that's how things are. So this is just to give you the locations. We are all over the world, 38 countries. We got around 9 or 10 plants. The plant in Venlo is almost 2 to 3 football fields के बराबर है. That's the amount of production we have basically. Next slide. It's a good thing. This is an important message which I wanted to bring to the table for all of you, right? अभी it's important for us to remind ourselves, हर दिन सुबह उठ के वैसे ही काम करोगे और रिजल्ट अलग एक्सपेक्ट करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है. It's your goddamn issue, not anybody's issue. Okay? So unless you don't tweak your methodology of working, expecting a different result is a fool's paradise. That's what is the definition of insanity. Yeah? That's what I was trying to tell you through my real life story also. You have to keep tweaking yourself and keep learning from the last one so that you become better and better version of yourself. हर इन्वेस्टमेंट आप जो अपने ऊपर करते हो, you should become a better version of yourself as you go along, right? It's an important thing. And वो अभी आपके पास flexibility है. You have got lot of freedom and security also. Most of you might have very good level of privilege and security to experiment yourself. सबके पास नहीं होती है. If you have that, then be cognizant कि you have that resource in hand, right? Next slide. We'll talk about couple of problem solving strategies. I don't know how many of these would be familiar, but if it is familiar, I would love to hear from you people if you have heard about them. Because I know most probably some soft skills and problem solving were taught in the past semester or second semester, I don't know. So we tried to bring something in. I didn't know the material inside, so I didn't focus too much key what am I going to tell. I just compiled in case it makes sense, then we will do it, right? Next slide. So it talks about an example. Yeah. It says about red, yellow, blue, green are mounted side by side for a store to display. Who can tell me how many possible combinations are going to be there? कितना हुआ भाई? है? ये कैसे अचीव करते हैं? लिख के या कोई टेक्निक अप्लाई करके? ठीक है, मेथड है ना. लेटर सिविलाइजेशन में जब पुराने जमाने में तो बेचारों के पास नहीं रहा होगा, तो वो तो एक एक मार्क लिखेंगे 4 और उनको काटेंगे और सारे यूनिक कॉम्बिनेशन सब लिखेंगे बैठ के. तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन
you can also apply method to it. So जो पढ़ रहे हो उसके अलावा भी चीजें पढ़ना जरूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन जो पढ़ लिया है उसको भूल मत जाओ, क्योंकि जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अप्लाई करना पड़ेगा बॉस। और अगर क्विक सैंड की तरह आगे चलते जा रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से तुमने 15% से लेके 50% तक अगर रिटेन नहीं किया है ना, तो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो गया। तो तुम सिर्फ नंबर के लिए खेल रहे हो और कुछ नहीं। अगर नंबर के लिए खेलोगे तो कुछ नहीं होगा। नंबर बाई प्रोडक्ट है तुम्हारे काम का। पहले समझो कि क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये। या सो ठंडे दिमाग से मेथोडोलॉजी लगा के यू नीड टू अप्रोच थिंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन इन लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ यू आर गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तुम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो नहीं है, या मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो आप नहीं कर रहा हो। तो you need to first understand and interpret the problem and then be able to apply method and logic to it, right? It's an important technique. तुमको कहीं जॉब पे भी अगर कोई चीज दी जाएगी ना, अगर तुम मेथोडिकल नहीं होगे तो जस्ट लेट्स से कि तुमको एक यही चीज को ले लो, बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको सर्टेन स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना। किसी लैंग्वेज में कोड करना रहेगा तो पहला स्टेप वो रहेगा, उसके यूनिट टेस्ट लिखने रहेंगे, दूसरा स्टेप होगा उसमें कितने कॉम्बिनेशन आपको लगते हैं कि वो वैलिड है, इनवैलिड है, उनकी कुछ कंडीशंस होगी। वो शायद बोलेंगे कि येलो और ग्रीन, ग्रीन और येलो सेम है, तो आप इलिमिनेशन करिए, राइट? कंडीशंस लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप मेथड कैसे लाएंगे जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, राइट? खासतौर से किसी भी लाइफ के स्फीयर में तो अप्लाई होता ही है, बट जनरली आप कंप्यूटर साइंस में तो ये करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू लिस्ट डाउन फर्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू बिफोर यू स्टार्ट डूइंग इट। दैट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। 80% हमारा काम प्लानिंग में जाता है, 20% ही कोडिंग में जाता है। तो अगर आप 20% पे 80% अपना टाइम लगाएंगे ना, तो आप कोडर ही बन के रह जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लानिंग कैसे होती है, हाउ डू यू प्लान योर टू सॉल्व समथिंग, टू अटैक समथिंग, हाउ टू अप्रोच इट। योर अप्रोच will make you different than others. How you approach the problem will make you unique. Every one of you, including me, is not going to approach the problem in the same manner, right? वो वैसे नहीं होने वाला। Does that make sense? हाँ? So अपनी अप्रोच पे ध्यान दो। कुछ लोगों की बहुत स्मार्ट होती है, that's what makes them different. That's what makes them different. चाहे आईआईटी में हो चाहे एमआईटी में हो, रियली डजंट मैटर। उनकी लैटरल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है और वो फटाक से अप्रोच करते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ देयर मेकिंग इज। या डज इट मेक सेंस? नेक्स्ट स्लाइड। इसके बारे में सुना? इट्स वेरी इजी, बट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट हैव यू रेड अबाउट इट अदर देन व्हाट इज रिटन हियर? व्हाट कैन यू एडिशनली ऐड टू दिस? ट्रायल एंड एरर तो कॉमन चीज है, लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ चौथा एक इसमें और पॉइंट ऐड कर सकता है जो बाकी 3 पॉइंट के सिमिलर ना हो? एनी आइडियाज आर वेलकम। चैतन्य, व्हाट्स योर ओपिनियन चैतन्य? So I would like to add another point, like trial and error is not about like some other mistake also inside the joy, and it's not compulsory like while doing a trial and error to get like a proper output. You can also transfer the other outcomes. हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दूसरे के आंसर पे पाइलॉन में कभी मत किया करो। वो ग्रुप डिस्कशंस में फायदा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके पॉइंट को तुम प्लस करते जाओगे वो सिलेक्ट होगा, तुम बाहर हो जाओगे। ये ग्रुप डिस्कशन की स्ट्रेटेजी होती है, वो बता रहा हूं आपको। आपके प्रोफेसर लोग भी आपको बताएंगे, अपना ओपिनियन मैटर करता है, चाहे गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस मैटर करता है यार, ठीक है, मोदी जी की तरह।
वो हर चीज को लेके कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके पीछे कुछ हुआ नहीं होता उस समय, बट वो कॉन्फिडेंट रहते हैं. अपना ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी में याद रखना हमेशा. दूसरे पे पाइल करोगे, उसका सिलेक्शन करा रहे हो तो अपना फायदा नहीं कर रहे. ठीक है. दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. कारपेंटर्स डू दिस अ लॉट. दे कैलिब्रेट. कभी भी तुमने कारपेंटर को वन शॉट में कारपेंटरी करते देखा ही नहीं होगा. वो पॉसिबल ही नहीं है ना. उनके पास इतने कैलिब्रेशन टूल्स ही नहीं होते हैं. दे बेसिकली वर्क टुवर्ड्स ए ऑब्जेक्टिव, राइट, and they calibrate towards it, very more or less similar to what you were saying, but they calibrate themselves towards that. So this is an important technique, but don't get lost into this technique. If you start with very large set, trial and error can take too much time, and time will be a factor in applying this technique, right? If you continue to guess, then it is not going to be good. So जैसे मेरा बच्चा है, ही लव्स करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, तो लंच टेबल पे बात करेंगे, उससे वही सवाल कल पूछूंगा और आज पूछूंगा, तो उसका आंसर पे वो गेस करता रहता है. तो अभी इन्फिनिटली तो गेस करते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना. तो आई हैव टू टेल हिम कि बस 2 गेस के बाद से नहीं चलेगा, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा नहीं तो. So trial and error is not a very good technique if you are not able to calibrate very fast to the solution. This will be very important for you when you give your exams, because you will use the principle of elimination, do trial and error. बट अगर तुमने अपने सोल्यूशनिंग में ट्रायल एंड एरर को ओवर यूज करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा या तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा. सो एक पॉइंट के बाद से तुमको अपने कन्विक्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बेसिकली गो फॉर इट एंड जस्ट अप्लाई इट. How can we stop doing that, or how are the circumstances that we can avoid that? हाँ, so very good question. You should set boundary conditions to anything. What does that mean? If you have fever of 99, you are generally advised by medical science not to take any kind of anti-fever medicines unless the fever crosses 100. Yeah? You have to apply boundary conditions to it. तो जब भी आप group discussion कर रहे हैं, somebody will have to be a leader in the group and tell कि हमारे rules of engagement ये होंगे. We are okay to do trial and error. I empower you, but your empowerment is a function of the following rules. If in 1 hour we are not reaching to a consensus, then we will disagree and commit so that we can move forward, because moving forward is in best interest of all of us. Largely, if you set that kind of a parameter which is strong, everybody accepts कि भाई मैं सोल्यूशन निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है कि मुझे भी आगे ही बढ़ना है. तो ट्रैफिक जैम में फंसे रहने से क्या है, व्हाट ही इज सेइंग मेक्स सेंस, एंड वी विल सेट बाउंड्री कंडीशंस व्हिच इज एक्सेप्टेबल टू 5 ऑफ अस इन द ग्रुप टू से कि भाई ये सही चीज है, आई एग्री, हमें हमारा टाइम भी मिलता है, तुम 3 सोल्यूशन लेके नहीं आ सकते तो यू कट योर सेल्फ आउट, तुम 60 मिनट्स में वापस नहीं आ सकते, यू कट योर सेल्फ आउट. Then you go with the other person's solution, and that is disagree and commit. That's how you play the game, right? So ultimately it is about gamification, and you need to set the rules of the game. ऐसा random arbitrariness नहीं हो सकता. So you need to remove, what I'm trying to say is you need to remove the randomness from the problem. Carpenter है, calibrate कर रहा है, but the important point is that the result has to be satisfactory. उसकी boundary condition है, वो तब तक उसको iterate करता रहेगा, but टाइम बाउंड मैनर में करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट भी फैक्टर होगा. ही माइट बी डूइंग लॉट ऑफ वेस्टेज विच विल बेसिकली टेक लॉट ऑफ टाइम एंड मनी फ्रॉम द पर्सन फॉर हुम ही इज डूइंग एंड फॉर हिमसेल्फ. या बिकॉज वो ज्यादा टाइम लगाएगा तो वो नेक्स्ट जॉब नहीं कर पाएगा, राइट? क्योंकि एक ही जॉब पे इतना टाइम लग गया, करेक्ट? सो जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, तो मेमोरी के साथ भी ऐसा ही होता है. उसका कंजम्पशन पैटर्न पे बाउंड्री कंडीशन लगाना जरूरी है, वरना तुम्हारा कोड जो है वो कोड डंप मार देगा, प्रोडक्शन में इश्यू हो जाएगा. हम कल एक प्रोडक्शन इश्यू की बात कर रहे थे, थ्रेड इन्वोकेशन हो रहा था. आई विल कम टू यू. थ्रेड इन्वोकेशन हो रहा था, थ्रेड पूल में से थ्रेड्स यूज करने थे, नॉर्मल जेवीएम टास्क एग्जीक्यूटर, बट कोड ऐसे लिखा गया था कि टास्क एग्जीक्यूटर नए थ्रेड पूल्स स्पॉन कर रहा था. तो थ्रेड्स पूल्स के स्पॉनिंग की वजह से मेमोरी
एग्जॉस्ट हो गई और कुबरनेटिस के क्लस्टर में 2 नोड्स बैड हो गई, हमको उस 1 लाइन ऑफ कोड से $35,000 का नुकसान हो गया क्योंकि वो कार्ड चेकआउट में था इन विद इन स्पैन ऑफ 5 मिनट्स। सो आपकी एक मिस्टेक भारी नुकसान कर सकती है, एंड यू नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस यू आर वर्किंग इन। यू कांट डू without any boundary conditions anything. So it's important for you to understand that you test for your boundary conditions जब भी आप टेस्ट लिखें, क्योंकि आपकी रेपुटेशन उसी पे डिपेंड करेगी। जब आप कोई जॉब करने जाओगे और पहला आपको काम या दूसरा तीसरा काम दिया जाएगा, अगर उसमें ऐसा कुछ हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस तो जाएगा ही, कंपनी वाले भी काफी अनरियलिस्टिक तरीके से बिहेव करते हैं नेक्स्ट लिस्ट बनाने में जब उनके प्रॉफिट्स नहीं होते। ठीक है। So adding up to that question as well. So I've seen most of the entrepreneurs choose this part of this method, but this method is not a good method overall because it's in an entrepreneur world. It's like whichever business you start is not the business you end with. हाँ, So if the methodology is not good, so why do you implement that? Like why do you see, this methodology is very good because it supports ambiguity. When your objective is very ambiguous, आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल रहा है जैसा आप बोल रहे हैं, राइट, यू आर कैलिब्रेटिंग, एट दैट टाइम ट्रायल एरर करना पड़ेगा टू कंटिन्यू टू पिवट। इफ यू हैव टू पिवट, देन यू हैव टू कंटिन्यू टू डू ट्रायल एंड एरर बिकॉज यू हैव टू विन द गेम। एंड what is to be understood is that you continue to have good boundary conditions to continue to pivot. Otherwise product market fit ढूंढते ढूंढते आप काफी कैश बर्न कर देते हैं, काफी लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, कुछ लोगों को कई महीने तक सैलरी भी नहीं मिलती। तो वो जो स्टार्टअप वर्ल्ड है उतना अट्रैक्टिव होता नहीं है इसीलिए, बट वो एक अच्छा लर्निंग ग्राउंड रहता है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है। 70-80 घंटे काम करते हो हफ्ते के, यू गेट टू लर्न अ लॉट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। But trial and error in product market fit is very natural because it's very ambiguous where you want to go. Some companies realize it after 10 years, 5 years. Some companies realize it in 3 years. Where they started, they don't end there. And that's because of ambiguity, right? Even in this case, he is basically trying to be cautious. This example doesn't emulate the example you're saying. Here he is still very clear what he has to get. But he still applies that because he is trying to apply judgment. But when you talk about product market fit, there we are doing trial and error because we really don't know what makes, like what is my strength, what is my weakness, the SWOT is not fitting up. So जब वो line up होगा, then it will be more clear, right? So point ये है कि even when you have studied, it can invoke different and richer conversations depending on with whom you are having the conversation. ठीक है? That's the important thing. ये theory है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जितना डिस्कस किए जाते हैं उतना ज्यादा एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठता है। सो वॉट एवर यू रीड, ट्राई टू सी दैट यू फाइंड एन एप्लीकेशन फॉर इट, राइट? इफ यू डोंट फाइंड एन एप्लीकेशन फॉर इट, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कभी बैठेगा नहीं, विल नेवर गेट इनग्रेड। या नेक्स्ट स्लाइड। सो जो प्रॉब्लम लिखी है स्लाइड पे, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कैसे सॉल्व करनी चाहिए? ये टॉप व्यू है आपके किसी भी घर के किचन का। हमको टाइल्स लगानी है इस पे, समझ लो किचन देखा है ना सबने, कि सब लोग अपने मम्मी पापा पे छोड़ दिया था खाना बनाने के लिए। एक किचन में ये गैस स्टेशन है और ये एक राउंड एरिया है सामान रखने का। अभी अपने को ये पूरे ब्लू एरिया में टाइल लगाने का है। किसी को कुछ आइडिया है क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ भाई। What will you do that? So we will take a area of this empty. We will take a. We want to take empty space like for the stove and the empty around circle. We will take a area of that, and we will deduct from this to where we want to put a tile on this. ठीक है। हमें अगर ब्लू वाले में पुट करना है ना, तो हमें ना स्क्वायर वाला जो है और सर्कल जो है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, उसी कारण हम उसमें प्लेस कर पाएंगे। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद हिम? क्या नाम है भाई तुम्हारा? My name is Piyush. हाँ पीयूष। So for this we can divide this pattern in 3 forms. Like for that
rectangle one, and then for that circle one, and that remaining part. So we can use this divide and conquer technique. Like we can take an area of that particular cutouts. Like for that remaining part of that view area, then for that circle area, then for this remaining area. So we can put tiles in the pattern way. Okay. Interesting point ये है that these are the kind of problems which our mason are solving. But they are much better than us on solving because they practically do this, right? So the important lesson here is, ये तो आप लोग भी solve कर लोगे, you are very smart. You will figure it out more or less on the same lines as what Sparsh Piyush are saying. Or somebody might have a different way to solve it. So he will stand out or she will stand out in the crowd, right? Maybe Sakshi को कोई और तरीका समझ में आ गया होगा अभी तक. But the point I'm trying to make is कि ये मेसन तो रोज ही सॉल्व करता है, वो इसलिए सॉल्व करता है बिकॉज वो प्रैक्टिकली काम करता है. अभी आप यहाँ पर जावा में पढ़ लोगे या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लोगे, बबल सॉर्ट, ये सॉर्ट, वो सॉर्ट, और एक बार भी बबल सॉर्ट पे कहीं कुछ अप्लाई नहीं किया तो वो बबल सॉर्ट जब आपसे जीडी, पीआई या किसी भी इंटरव्यू कहीं पूछा जाएगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे उसके बारे में, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होगा नहीं. यू विल नॉट हैव द कॉन्फिडेंस. So you need to have, in order to build confidence, you need to fail and succeed on things. In order to fail and succeed on things, you need to apply them so that you can learn through experience. I am very hopeful that the environment here provides you to fail and succeed because it's a secure environment. $33,000 का नुकसान नहीं करोगे, right? Next slide. Okay. इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yeah. I can't remember your name. It was little tough. It starts with A though, I believe. What should be your approach? क्या hypothesis क्या है? So this is a pattern that is used if you see in OTT, where they check out the behavioral pattern of how Indian mindset is. So they tend to make family serials more because it caters a larger audience. और जो एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या पैटर्न है? All of us are into gaming for some reason. I don't have any game on that. The only one I played was Doom when I was there. अब वो I don't think so वो गेम है आजकल, कि है अभी भी है, चलता है, और डेस्कटॉप पे चलता था, वही एक गेम था मेरे पास. Everything has a pattern into it. So that is how games are made. I think it has a pattern going through where you have to defeat one boss to get to another boss and so on. So I looked into this whole whatever working you are going through as a game where everything has its own way of solving. This is another thing which is, I love this technique because life में हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक पैटर्न होता है. बहुत सारी, अगर जो चीज तुम्हें रैंडम दिख रही है वो नेचर एक्चुअली रैंडमली कुछ भी नहीं कर रहा है. नेचर के हर काम में पैटर्न होता है and that is basically inherent in our ways of working also. Randomness कोई चीज नहीं होती. एक ट्रैफिक में भी जो आपको chaos दिखता है उसमें भी एक्चुअली पैटर्न होता है. Anybody who is in love of physics will understand this the most, who has passion for it. Yeah? हाँ गगन, आंसर आया? हाँ, क्या पैटर्न है? आंसर छोड़ो, पैटर्न बताओ, वो इम्पोर्टेंट है. आंसर तो मिल ही जाएगा यार. My name is Sahil. हाँ साहिल, और तुम्हारा दोस्त का क्या नाम है? हाँ, तो ऐसे ने क्या हुआ? Sir, so I see a pattern that every fourth locker that student 3 opens is the same locker as the third locker the student 4 opens. Sir, so for example, if we take, तुमने तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको. शालीमार बना दिया उसको. sir, Go on. So if you see, so student 3 he's changing the locker after every third, right? Okay. So he's opening 3, 6, 9 and 12, right? So Student 3. so he's taking multiples of guesses, right? हाँ, लेकिन क्वेश्चन क्या है? What lockers will be left open? So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहिल. सवाल पे ध्यान दो. तुम उसके उल्टे में जा रहे हो, तुम रिवर्स लगा रहे हो, जबकि मैं पूछ को चाह रहा हूं.
और उतना 3 सेकंड निकल जाएगा, बम फूट जाएगा। सो तार वाला देखा है ना पिक्चरों में, तुम वो कर रहे हो, नीला तार काट दोगे या लाल तार काट दोगे, बस हो जाएगा तुम्हारा, खत्म, अभी टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। Student 1 is opening all the lockers. बढ़िया है। So the student 2 is closing every other locker from starting from अब second. उसका क्या फायदा है कि स्टूडेंट क्यों क्या कर रहा है जब तुम्हें 1 का पता है कि वो ओपन कर रहा है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट लॉकर्स विल बी लेफ्ट ओपन? First one. The first one. हाँ, तो 2 और 3 4 के क्या फायदे रहेगा? अगर फर्स्ट है तो कितने लॉकर खुले रहेंगे सीक्वेंस में? शायद से 1, 5, 10, 15. I think. दीज आर एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर्स। ये सीरीज चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड। साहिल, व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? जिक्सॉ पजल कहाँ से आया इसमें? Not jigsaw puzzles. These are the puzzles where we have to like find a route. अच्छा अच्छा, ओके। Those maze, yes. Maze. Yeah, you Okay. these type of solutions when you're trying to find a way through a maze or something. ओके, हाँ, नेम। So my name is Prem. हाँ, प्रेम। This is useful in solving puzzles like Sudoku and maze, where like you take a certain path to move forward and solve the problem, but then you encounter a certain situation where the solution that you used till now is not relevant anymore. So you take a few steps back and you try to tweak your solution a bit so that you can advance in the problem. ओके, So this happens like I'll give an example of management. So in management there are two of this context uses. One is the deep root solution level, where you enter the deep root problem and understand where we have lagged, and we come back a step back or just go browse to back, like where we have made and caused an error, and then we solve it through that area. ओके, My opinion on this would be it is somewhat similar to trial and error, where you go 2 steps ahead, you see something is not working out for you, you come back from 1 step, you see why it did not work, and then work through it again to take 2 more steps ahead. So if we notice, like if we are writing some code, we know we have reached the outcome, but maybe our main motive is to reduce the lines of codes. So this can be used. So the biggest difference is what you are saying. Your analogy and analysis is very good. ट्रायल एंड एरर और बैकवर्ड थिंकिंग में सबसे बड़ा फर्क ये रहता है, टू योर स्टार्टअप एग्जांपल, वी डोंट नो व्हाट दैट स्टार्टअप विल बी, तो ट्रायल एंड एरर, देयर इज हाई लेवल ऑफ एम्बिग्युइटी। वर्किंग बैकवर्ड में इट इज क्लियर व्हाट रिजल्ट यू वांट। सो फॉर एग्जांपल साहिल सेड अबाउट मेज, मेज में पता है कहाँ पहुंचना है, बट यू ट्रेस बैक, you go forward, trace back, you go forward, right, to your point or to your point. So वो एक fundamental difference है. So that's the catch there. If you know the outcome, then you know what technique to apply. At that, if you know the outcome and you try to apply trial and error, there is a very high chance you will end up with a very suboptimal way to solve it. And you will waste a lot of time and money because you already know what the objective is. So you will waste a lot of time on trying to make a strategy through trial and error. When you know the objective, what you have to solve for, in that particular case, you should spend your time making the strategy, which is like winning the maze game. Ki bhai, how can I do it with the least amount of reverse engineering required in it, right? So that is what is true in this case. Previous month का balance जानना है, इस month का balance इतना है. How would you do this? I'm not looking for answer, I'm looking for methodology. हाँ यशिका बोलो, what's your name? What's the deal here? क्या करना है? So the working backward, working backward. So इस month का जो भी हमारा खर्चा हुआ, जी। जो भी हमने deposits किया और जो भी हमें interest मिला, वो सब add up करके अभी का जो balance दिखा रहे हैं उससे subtract करके maybe we can get a previous month's bank statement. So like we are working on this month's खर्चा. More or less the algorithm is right. More or less the algorithm is right. Yes. हाँ, क्योंकि ये चीज क्रिटिकल पार्ट है, यहीं पर सब लोगों का सवाल का आंसर गलत हो जाएगा, ये डिपॉजिट और इसी में घूम जाओगे। जनता इसको
रिवर्स सिंबल में डालेगी और अलग ही आंसर निकाल के लेके आएगी लाइफ में. ठीक है, एनी बच्चेस, गुड. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, ये कौन बताएगा? हु इज अ फुटबॉल फैन? बताओ भाई, व्हाट्स योर आंसर? छोड़ दो वो वाला, अपना छोड़ दो, इसके बारे में. ओके, डिफेंस. हाँ भाई साहिल. अच्छा, हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ हुसैन. मिडफील्ड. अच्छा, Because when if you are an attacker, you have so many options to go for. Like you have an option to pass to other player, and you can cut the player into left or right. And if you are a defender, in case of defense, you only have one option, which the attacker might be going. So it's actually defender for me. हाँ आयुष. हाँ साहिल, बोलो. Sir, so I wanted to explain why the goalkeeper, because the goalkeeper has an entire view of the field. So he knows where the attack should be played and where there are open spaces. The coach standing out also has that. He keeps shouting, but nobody listens. Sir, but a goalkeeper on the field, sir, when sir, mostly if you see players listen to the goalkeeper because he has an entire. फुटबॉल फील्ड कितनी बड़ी होती? 105 meters. सब लोग ठीक ठीक लगा के एक नंबर बताओ. साउंड गोलकीपर की दूसरे गोल से उस वाले गोल पे जहां पर फॉरवर्ड खेल रहा है वहां तक पहुंच जाएगी क्या? जब इतने 50,000 का स्टेडियम होता है. Think about what you're trying to say, right? I can counter your argument. I mean, you should have a good answer to it. I'm not saying. I'm saying that how common sense will come into play, and people say, "Ki bas, that's not as true as possible." His vision is not the line of sight. Sahil. His vision is not the line of sight. His vision and its control is very limited, actually speaking, to a goalkeeper. Next slide. No position is important in football. Football is a team game. Football is a team game. You cannot play football without a midfielder, without a goalie, without a forward, without a defense. It's an important skill in today's world if you want to basically be successful. If you are not a team player, you will not be successful because there is only that much you can do by yourself. Ultimately, you need a team. I am nothing without the 150 people behind me. I am nothing without the 6 other VPs of engineering who work with me, and I am part of the leadership team. Right? I am nothing. I could not have been here if Nikita, Nilesh, Swapnil, all of those people would have been not coordinating to get me here. It's a teamwork. Ultimately, you all are also part of the team. If you were not ready to listen to me, there is no way I will be standing here and talking to any one of you, right? Compulsion nahi hota life mein, right? So it's a teamwork at the end of the day. We are all working together towards one objective. The objective is to win the match or defend the goal, depending on whatever it is. This is a team game. No position is important. All positions are important. One single position, you cannot single it out, right? So realize the benefits of team. आप जब ग्रुप वर्क करते हो, if you in your group work are able to identify कि भाई स्पर्श का क्या strong point है, तनिक क्या strong point है, आयुष का क्या strong point है, then you will be an effective team. अगर सारे लोग एक साथ प्रॉब्लम पे ब्रूट फोर्स लगाओगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो कोई भी फायदा नहीं होगा. और टीम में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी अच्छी टीम होगी. ऑल मेल टीम, ऑल फीमेल टीम यूजलेस टीम्स होती है. A team of a combination of male and females or other gender, or a team of combination of diversity, is a very different basically connotation as it comes along. You know what? This is a very serious aspect in corporate. Be very careful about understanding diversity and inclusion. If you do not,
you risk doing communication which may insult or harm the other person and you may be reported on it. Understanding diversity inclusion, even the smartest people will be told to leave within seconds if you disrespect. ये स्किल्स आपको जितना आगे ले जाएंगी समझने के लिए कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इक्विटी का क्या मायने है आज की दुनिया में, उतना आप आगे बढ़ेंगे. एंड आई बिलीव दैट वी शुड बी डूइंग बेटर देन व्हाट आवर जनरेशंस वर डूइंग. या इन सब चीजों के बारे में बहुत ध्यान रखो. ये ना तो आईआईटी में पढ़ाई जाती है ना आईआईटीएम में पढ़ाई जाती है. यू हैव टू लर्न आइदर द रॉन्ग वे और लर्न इट द राइट वे. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स. आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में और अगर आपके पास बहुत अच्छा ओपिनियन नहीं है तो रिजेक्ट भी किया जा सकता है, भले ही आपके सारे टेक्निकल राउंड निकल गए हो, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये बिहेवियरल फिट नहीं है. सो आप लोग सब अब ऐसी एज ग्रुप में पहुंच गए हो जहां पर यू हैव वोटिंग राइट्स टू अडल्ट राइट्स टू एवरीथिंग, राइट. तो ये अंडरस्टैंडिंग कुछ चीजों को लेके ना सीरियस रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि वो हार्म कर सकती हैं आप गलत तरीके से, राइट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम वर्क, डाइवर्स टीम्स में काम करने की आदत होनी चाहिए. अगर नहीं है तो आपकी खुद की परफॉर्मेंस, योर ओन परफॉर्मेंस विल बिकम एन अंडर परफॉर्मेंस, बिकॉज यू विल फाइंड इट टफ ना यार. यू आर नॉट जस्ट एबल टू कोप अप विद द मैकेनिक्स एंड द डायनेमिक्स ऑफ द टीम, राइट. सो मैकेनिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ द टीम समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज टीम नहीं हो सकता. सो फॉर एग्जाम्पल माई son, he loves football like all the other kids. I mean, it's a general बात है, आजकल सबको ही फुटबॉल, but he loves it. He is a runner and he is also a great footballer for his age. So he is called for trials. अभी हम उसको ट्रायल्स के लिए ले आए, तो he now plays for Sporting Club Bangalore, but उससे पहले he was playing for Bangalore Football Club BFC. तो BFC के ट्रायल्स के लिए गया. वो ट्रायल्स आर हैपनिंग फ्रॉम 15 other BFC local units. South Bangalore, North Bangalore, East Bangalore. And now he doesn't know any one of them. He has been put in it. He plays defense. And he has been put defense and midfield. And he has been put in it. Honest to God, we took him to 2 trials. First of all, he's a kid just now. अभी समझ में आने में थोड़ा difficulty है. But second is, he was totally clueless on the field. He did not have any football contact for both the 2 sessions because उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कॉल करूं कि इससे बॉल मांगूं कि उससे बॉल मांगूं. He was running behind people, right? So वो टीम डायनेमिक्स को तुरंत समझना और टीम का पार्ट बनना will basically determine कि आप कितने आगे जाते हो. आप टीम मेंबर से टीम लीड तभी बनोगे जब you are able to show that passion and skill. Otherwise, you will be running behind people. When I put him into that different club, there his coach is the same as his school coach, and a bunch of people are his friends. But the other people are unknown, but they have been taught to go and shake hands. Who are you? What's your name? Who are you? What's your name? They have been taught that technique. So they basically come out, talk, and then go and play. Then they know. Tane ko ball pass karna hai, Ayush ko ball. That's how you make success everybody's success. जब आपने एक दूसरे को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो आप गेम क्या खेलोगे? टीम में भी यही होगा. या सो सोशल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स के साथ मैचअप करनी पड़ती है, भले ही आप लाइफ में बहुत अनसोशल हो तो भी. आई एम नॉट वेरी सोशल, बट professionally my social graph is very good because I know that the success of me, my team, objectives all depend on me, right? Next slide. Anybody has a clue what makes you a good public speaker? What's public speaking? Manmeet, go ahead. I think so. Confidence. Confidence is a major. Do you have anything else? Good topic, good presentation. Opinionated but not ego. Interactive. Understanding your audience. Yeah, Roshni, you have another point? Confidence and knowledge Okay. about the topic whichever we are doing.
I'm Jeevan, and I think the best good public speaker must have the good idea and the way to convey his message properly. Storytelling. Okay, good. हाँ So सर. the ability to make people interested. Okay. हाँ जी. What's your name? My name is Rahul. Rahil. Rahul. Okay. Hmm. So what makes a person a good public speaker? How he speaks, but also the ability to gain himself gaining from the public speaking. बहुत बढ़िया. Very good. Anybody else? Sometimes it also prefers you if you have a good networking skill. Because of networking, you can grasp audience easily. Mhm. And Mohammed Fahim, I think it's like the way you convey the idea to the audience. Okay. Next slide. I think so. Quite a bit of things you have said, and you will see a resonate in the slides. So we will not deep delve in it. We'll go expressway on it, right? But important message is traditional definition is sender receiver. खत्म हो गया किस्सा. ये ट्रांजैक्शनल डेफिनेशन है. एक्चुअली लाइफ में क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड पे सोर्स और परसीवर होता है. ठीक है. सो दिस इज वेयर मिसकम्युनिकेशन हैपेंस. ये बहुत सटल चीज है. आई मीन द स्लाइड वर्क विल बी अवेलेबल विद स्वप्निल और समबडी. आप लोग ले सकते हो. बट द इनेट स्टोरी इज बिहाइंड दीज थिंग्स ओनली कि बॉस जो आप समझते हो और जो होता है उसमें बहुत डिफरेंस है. इसी को फैक्चुअलिटी और रियलिटी में डिफरेंस आता है और उसी से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. 3 V's वेरी इंपॉर्टेंट. वर्बल, वोकल, विजुअल. राइट. अभी आप देख रहे हो कि विजुअल इसमें काफी ज्यादा है. वर्बल और वोकल ऐसा है. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है दैट आजकल दिस इज वेरी एप्लीकेबल in a traditional working environment. We are remote first as a company, which means I don't go to office, I have a home office. हमारा ऑफिस है बिकॉज एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, बट हम डेली नहीं जाते. आफ्टर कोविड things changed. Some offices have gone hybrid, the others have basically gone like remote first. So we work from home. उस केस में रिटर्न स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. If you do not have a very good written skill, then you will not be able to get your story across to the people. Yeah. So it's very important for you that although यहाँ पर percentage इसको traditional sense में सबसे कम दिखाया गया, it's very important that your visual dynamics have to combine with the written skills, and then your narration should happen, which is vocal. Unless you are not able to write your thoughts, you will not be able to articulate and tell a story, because आप randomness में चले जाओगे. Right? Writing is an important skill. Most of us don't have a good handle on writing, and unless you're not able to write a system design, unless you're not able to write a problem statement ka solution or a system architecture with the visuals, it's kind of be very difficult for you to go into a review session. Say suppose I'm sitting and I'm having a review session, I need to know what solution you're proposing, not what code you're writing. वो code लिखने का काम 20% का काम है, बाकी का communication in 3 parameters में होगा. Right? And async environment में writing is an important skill. Next. Many of you said about the know your audience. This is basically what you require. You have to consider what's the level of the audience, receptivity क्या है, how it is going to work, what is their cultural background, what is the psychological needs. If you're not able to understand your audience, it is like selling your product. आपको आपका कस्टमर नहीं पता है, आपको अपनी मार्केट नहीं पता है, तो प्रोडक्ट क्या बेचोगे? प्रोडक्ट मार्केट फिट आना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली बाहर मार्केट है, आप प्रोडक्ट हो, आपको पता होना चाहिए आपकी क्या क्वालिटीज हैं और बाहर मार्केट में आप क्या टारगेट करोगे, सो दैट यू गेट व्हाट यू वांट. यहां अंदर बैठे इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट मांगने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला. वो एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या एफर्ट मारा है ये जानने के लिए कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज मार्केट ऑफर. राइट. अप्लाइंग दिस कम्युनिकेशन टेक्निक टू नो योर ऑडियंस is an understanding, because you are going to sell yourself to that audience, because you need to include me in your team. You need to then understand how you are going to get that done. Yeah. Unless you don't understand your target market, you will not understand how you apply yourself to the target.
Yeah. Next. Storytelling is important. It is necessary to describe yourself, express your emotion. Empathy is an important thing. If you do not have empathy for people, after a certain stage in life, you will start to become plateaued. बिकॉज नॉन एम्पैथेटिक लोगों के लिए ज्यादा जगह आजकल है नहीं और ये सब चीजें ज्यादा रिकग्नाइज स्किल्स है. इमोशनल quotient has to be very high. I have learnt it over a period of time. My EQ was very low. I started to articulate, but still my EQ is still very low, right? And incidents in morning does tell that my EQ is low with what happened at the airport. But जो लोग ज्यादा empathetic होते हैं वो वैसे react नहीं करते जैसे मैंने किया. But at the end of the day, emotional quotient is an important aspect. You need to know how to express your emotion, and you need to know how you can paint word pictures. You need that visual language to help you. That is why you say, for example, right? For example, like this, analogies, example, that's important thing. Third, keep it simple. हम लोग वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिकोड कर रहे थे, उसमें घुस गए, अरे ये चौथा वाला खोल रहा है नहीं, पांचवा वाला खोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना नहीं है. बस कीप इट सिंपल. दिस इज ऑल्सो एक्चुअली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. When you are proposing a solution, don't propose a solution which will become a big problem for others. Yeah? Whatever you propose should not become a problem for tomorrow. Right? Solutions of today shouldn't be problems of tomorrow. So ऐसा कुछ मत कोड में लिख देना to make you understand कि boss, when the other person comes in and says कि boss ये क्या लिख के गया boss ये आदमी, सब refactor करना पड़ेगा. Right? You don't want to do campground rule. Leave the place better than you found. Leave your code base better than you found. That's one of our engineering principles. Keep it simple is also one of our engineering principles, right? अपनी communication को complicate ना करें. This has got multiple uses. Fourth, body language and appearance is an important aspect. If your body language is not very positive in an interview or a conversation, your confidence level and your interaction with that other person will not come. Half of this will be determined on what your body language is, right? अभी जाके इंटरव्यू में ऐसे बैठ जाओगे, that's actually a wrong body language. It means that you are not open to conversation. Basic rules है, right? हम लोग की बहुत आदत होती है ऐसे बैठ जाने की. So वो it's like saying I am not ready to communicate, right? It's an important thing to understand. Next slide. Listen, mirror, identify, respect, explain, build rapport, connect. Having a good network which influences what you want is an important thing. Yeah? Next slide. Vary your delivery, projection, articulation, pitch. सिर्फ एक ECG लाइन की तरह नहीं चलते रहना. Right? Ever watch Amitabh Bachchan speak? That's the classical example I can give. If you want to improve, then always spend 2 minutes preparing something and speaking in front of mirror. Record it, listen to it. That's your self-learning technique. No coaching class will give you any amount of knowledge around this. You need to record yourself and assess कि क्या ये कम्युनिकेशन मेरा बेस्ट कम्युनिकेशन है कि मेरा वर्स्ट है, और am I improving every week on it or not? It's a self service exercise. मिरर है या फोन है, रखो, अपने आप को रिकॉर्ड करो, try to see how you are doing. Are you moving around a lot? Are you throwing your hands in the air a lot? Are you varying or not? Getting your pitch is right. Why? If some of you want to become leaders from where you have started now to where you want to be, these skills will be very important. And any which ways, overall having great communication skills is very important. Yeah? 7. This is what we talked a lot. I think so. We were talking about knowing our audience, getting into the subject. Ultimately, we need to be at all the places and see that we are able to relate with the character which is under question. Unless we all are not related with that, there is no way your message will get amplified. It will just fall deaf on the people. Yeah? Be sincere is a
trick there. Avoid distracting visuals, verbals, and vocals. Don't make flashy things. Don't use too much of flash jazz in your communication. Distracting visuals ऐसा बिल्कुल डिस्को लाइट की तरह चल रहा है, या फ्लैशी वर्बल्स जो आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहे, या वोकल्स जो किसी को पल्ले नहीं पड़ रहे, and is basically taking away your meat of the subject. You should not be doing it. That's more on the presentation, but also when people try to mix up a bunch of things to narrate a story. 9. Make eye contact. This is what I said. If you don't have eye contact, half of your battle is lost. You need to have eye contact. In order to have effective communication, you need to have the eye contact. If the eye contact is not there, you are not at all engaging with your audience. कोई मतलब नहीं. इंटरव्यू में भी अगर आप अपनी आंखें चुरा रहे हो, वो आपको ये बोलेगा यार कॉन्फिडेंट लगता नहीं है यार ये आदमी, टेक्निकली तो ठीक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यार कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कैसे खेलेगा, वो लोग तो कच्चा चबा जाएंगे. दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट वुड बी, राइट. 10th, be prepared. Practice, practice, practice. That is the important thing. Be prepared. We do not know, none of us, when the opportunity will come. You can make a career, you can plan for it, but opportunity is like black swan. ये word किसी ने सुना है? Black swan. जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उन्होंने सुना होगा. ब्लैक स्वान अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं लिखी होती है, वो सडनली क्रिएट होती है. कभी कोई आदमी रिजाइन कर देता है, कभी कोई नई डिवीजन बन जाती है तो बहुत लोग चाहिए होते हैं, कभी किसी डिवीजन का एक्सपेंशन हो रहा होता है तो लोग चाहिए होते हैं, या फिर there is some restructuring going on which creates new opportunities for others in the system. Yeah, opportunities can come from anywhere and everywhere, but if you are not prepared for it, there is no way you will get that opportunity, right? You have to be on lookout. That is why army practices in peacetime to be ready for wartime. Yeah, that's why like rules of the games of sports and army teach you a lot. Civilian population को समझते नहीं उतने आसानी से. Yeah. आइस ब्रेकर. हाँ भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए. ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? सब लोग एक साथ बोलो, क्या नाम है? सोफिया है, सोफी है, क्या नाम है? सोफिया या सोफी है? सोफिया कहां पर है? यूएई. किसने बोला ये? सिर्फ एक नहीं बोला, सबको पता है यूएई में. ओके, कैसी दिखती है वो मैं बताऊंगा. नेक्स्ट. ओके, गुड 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 गुड. ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड. These principles are the principles which I follow. I am always happy to share it with people. You can find it on blog also, लेकिन not the way it is written here. ये मेरे कुछ के personal principles हैं. आप जिनसे भी resonate कर सकते हो. You are happy to pick it up and always ask a question from me, what not. But it's always good. I love to share the things. There is nothing like, there's no premium attached to sharing. If you love it, you take it. You don't love it, ignore it. Next. See, individual contribution must lead to productive collaboration. We did talk about it. Individual contribution goes thus far, but it should be productive collaboration. Yeah? Thinking in systems is important. You need to understand आपका system कैसे चलता है. अगर आप सिर्फ इतने बारे में अंडरस्टैंड करके सोल्यूशन प्रपोज करेंगे तो आपका सोल्यूशन उससे भी छोटा होगा और उसका स्कोप कल तक खत्म हो जाएगा. अगर आप सिस्टम को समझेंगे तो your problem solving skills will be much better if you understand system कैसे चलता है. Spend time to understand the system. Don't rush into it. Otherwise, you will have a reactive solution. Feedback loop. Feedback is a gift. If I told to shut down the laptop, some of you might have said कि यार क्या बोल रहे हैं, right? But feedback is a gift. If I tell you to talk and collaborate, feedback है, gift की तरह, ले लो. अगर अच्छा लगेगा तो एब्जॉर्ब कर लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इट डजंट हेल्प इन कोलैबोरेशन. या तो फिर लोग फीडबैक देना बंद कर देंगे, और फीडबैक देना जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन आप इंप्रूव होना बंद हो जाओगे. बेसिकली यू आर डन. लेवरेज इटरेशंस फॉर लर्निंग. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी
सॉल्विंग में भी हमने बात किया था, यू नीड टू इटरेट, कैलिब्रेट करते रहो, ट्रायल एंड एरर में भी कैलिब्रेट करो, बट यू नीड टू इटरेट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. आज अगर रोशनी 1.0 है तो रोशनी 2.0 क्या होगी वो रोशनी को बताना चाहिए, so that she can iterate, or Tanay, you can iterate to your next version. If you are not a better version of yourself in the society as you go along, there is no way you will be able to make others better. There is no way. If you want to really exceed and excel in life, जो भी करना है, पेंटिंग करना है, ड्रामा करना है, फिल्म में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, जो भी करना है, you need to be a better version of yourself. Having fun is important. If you do not have fun, if you don't make human connection, if you don't have a social network, it is very difficult in this global economy to survive, right? One of the statements I always make is that you'll have to be a global citizen in the global village. अगर आप ग्लोबल सिटीजन नहीं, आपको ये नहीं समझ में आता कि फ्रांस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप यूक्रेनियन के साथ काम कर रहे हैं, आई हैव गॉट यूक्रेनियन कोलीग्स हु वर्क फॉर मी, अगर आपको ये नहीं पता कि कीव में क्या हो रहा है और वो किस कंडीशंस में बॉम्ब शेल्टर में काम करके आपको डिलीवरी कर रहे हैं, और आप उनसे पूछते हैं कि हाउ वाज योर डे, बी केयरफुल, क्योंकि आपके ऊपर बॉम्ब नहीं गिर रहा, उनके ऊपर बॉम्ब गिर रहा है. नेक्स्ट, कीप लर्निंग टू सी डेटा. इमोशंस पे कभी भी डिसीजन मत लो, कुछ डेटा बैकिंग लाइफ में होनी चाहिए. ये कंपनी क्या करती है, इस स्टार्टअप में क्यों जाना है, उसको कितनी फंडिंग मिली है, क्या ये startup is safe for diversity, should you go it there, is it have a secure environment, what people say about it, इस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, बड़ी कंपनी में क्या करेंगे. You need to have some sense and sensibility of that, right? Failure is not a problem, bouncing back is important, right? When I told you the personal story, it is all about bouncing back every time and again, right? Ownership is important. ऐसा करके भाग जाने का नहीं. If you have taken up something, complete it. If you cannot complete it, then don't commit. काम नहीं उठाने का अगर काम कंप्लीट नहीं कर सकते. Very simple. God have principles in life. If I cannot come here, I should say no, right? I cannot say yes, book everything and then say no, हम नहीं आ पाएंगे. That doesn't work, right? Now I have to make it happen as ever I have to make it happen, right? Sense of urgency is important. I always feel this is very important for me as a person. I always feel certain amount of discomfort in life is good for life. If you become too comfortable, you will lose the battle. It's very, very important that you have some discomfort which makes you ambitious, curious to achieve something. Yeah? That's about it. हाँ बोलो बोलो. So as you said, you work on generative AI. हाँ. So after 4 years, Gen AI will be something which will be almost completed till that point. Technology never completes. It goes through cycles. Okay? Technology is always cyclic. There will be a hype cycle. Just now generative AI is in hype cycle. It will mature, sustain and evolve. It may also die to give place to general artificial intelligence, GAI. Right? So it is in a hype cycle. As much as you would understand and try to cope up with it, so much it is all embedded in your system. So at the end of the day, it's a utilitarian thing. If you don't know about it, then you are at disadvantage. You need to learn. But वो hype cycle है, उसमें suck up मत हो, but समझो कि how you will apply it to the problem statement. उसको करने के चक्कर में मत रहना, because जो कंपनीज कर रही हैं उनके पास पैसे बहुत है करने के लिए, जो कंपनीज यूज कर रही हैं उनके पास उसको बनाने के पैसे नहीं, वो सिर्फ यूज कर रही हैं, लेकिन उनके पास मोनेटाइजेशन भी नहीं है उसका. फॉर एग्जाम्पल, मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि अगर हम कुछ टास्क ऑटोमेट करेंगे तो कल मुझे स्टॉक मार्केट में बोलना पड़ेगा कि भाई 1000 लोगों को हमने निकाल दिया, तभी तो वहां पैसे लगाए होंगे खरीदने के लिए वो टेक्नोलॉजी, ऐसे फ्री में तो नहीं आएगी, तभी स्टॉक बढ़ेगा. सो किसी चीज को यूज करने का कोई और आउटकम होता है. जॉब्स जाती हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप की जॉब्स. हर जॉब्स पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है. आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि समराइजेशन टूल, कैटेगराइजेशन, थीमेटिक, ग्रामेटिकल करेक्शन, इन सब चीजों के लिए यू यूज इट. टेक द इनपुट फ्रॉम इट, पुट द इनपुट, टेक द आउटपुट,
take the output, apply your goddamn brain to it, remove the shit from it, make it original, then proceed further. It is a productivity tool. Don't rely on it like cocaine, right? मतलब don't be addicted to it कि यार सब बता दो मेरे लिए. So उसमें ऐसा क्या है कि सबका आंसर सेम हो जाएगा, किसी को भी पता चल जाएगा कि ये सब सेम ही है. I mean it is very easy to find all of that, right? हाँ भाई, और कुछ सवाल? So now you're working with the companies of Europe, and Huh. as we know, like right now, Europe is having a bad time here right, because of the recession they are facing. So like, how do like companies come up with like your company and like you all execute your required product? So recession कोई declared तो है नहीं मैंने. I mean that's your perception on what you read of the economics. How companies cope up is by keeping their operating expense tight. So we will say कि हम 5 साल में 3% से ज्यादा अपना operating expense नहीं बढ़ाएंगे, which means we are not going to hire too much, we are not going to travel too much, we will do as much as we can do with what we have. Yeah. So it's all about how we will continue to maintain the same growth in the almost similar or a little more single digit cost percentage, 3%, 4%. If that cost continues to increase linearly and the growth doesn't increase non-linearly, we will never be able to support the growth, and then we have to basically rift people, right? That is just the market dynamics of the business. We cannot do anything about that. But you need to basically have a very tight control, boundary condition. Finance will take over. Innovation will go back seat. You will have very strict operational controls in the company in order to make the company survive, grow and foster, and then strike at the right time when the market dynamics are better. Yeah. Yes. So as you said, you work remotely and also work in office. Huh. You have clients. I don't have clients here. I work for my own engineering. Team that is working Yes. outside of India too. Yes. And you also there said that you have to be considerate of all the diversity there is. Yes. So how do you make sure that your deadlines for your work is completed on time, making sure that you're considering all the factors the other person is going through and everything? So we take the, so we have a framework for setting objectives, key results in our company or any other large scale company. We plan keeping all of those things in mind, and we set goals accordingly. Ultimately, we will iterate to achieve them. Nothing directly goes in production directly nowadays. We do experimentation, we will release it in Ireland, smallest market, we will go to the next biggest market, Spain. We will not go directly to the biggest market because it will create too much traffic for us to experiment, and then we may not have that many resources. So there are a lot of risk mitigation strategies which we apply in order to achieve that. जब आप ऐसे teams के part रहेंगे, then you will come to know a lot better कि उस team में क्या risk mitigation exercises लगाई जाती हैं. But in general and large, there are methods by which we handle all of this, and we mostly have distributed teams. US, Europe, India, US, India, Australia. That's how we work. So that we have redundancies across 4 engineering locations in order for the teams to deliver. And try to modularize and break the problem as much as possible so that India time zone के अंदर India time zone की सब problem systems या सब assembly zone हो रही है, so that we remain effective to deliver in our time zone. That's how we do it. हाँ भाई स्पर्श. As a VP, how do you manage your time? As a VP, how do you manage your time, sir? how I manage my time. I am very methodical. I use the to-do list app of Microsoft, and I use my calendar to block everything, home, family, and professional work all together. I have got self-reflection blocks from 10 a.m. to 10:45, for example. I have got lunch blocks from 1 p.m. to 2 p.m. I put all of those blocks. I have kids football blocks on Saturday, Sunday, 2:30 p.m. So I put and plan it so that I know we'll try to strive to stick to it. If not, it's not all lost. You still have a plan B to activate. But I have a very clear to-do list.
I have a very clear calendar, and that's how I plan it. And I plan at least a month ahead in order to know what's going to happen, and then keep things on recurring. So, for example, today morning it flashed, I have to pay my electricity bill. It came on my to do. I went, I refreshed it, the electricity bill was there. I just paid, I marked it, and done. Right? So, I don't need to be reminded. Use softwares to improve your productivity. Don't put pressure on your most precious thing, your intellect, for redundant stuff. Software को बोल दो काम करने के लिए. So I have given it to the software to do that. It reminds me what has to be done. So little bit of planning, good productivity tools will take you miles in your life. Otherwise, it's like हाँ जब भी समझ में आया जो समझ में आया वो करने लगे. So yeah, that's how I keep myself pretty strict on terms of what I do. Right? I was explaining to them that my week has been very tough. I landed Saturday early morning last from Boston. I was here only in Navi Mumbai Saturday evening that day itself. I left Sunday night. Monday to Thursday up until yesterday 11 p.m. I had calls. Today morning I am with you guys. But that's like part of the planning. It will take time. You need to basically stretch any which ways. If you have to achieve, you will have to do all of this. If you don't want to achieve, if you don't want to basically if you don't feel about something, then you will not get the passion to do it here. But whatever be the case, ये जो redundant task है वो software को दो करने के लिए. You just need to just tell it once. That's it. Mobile phone पे रहेगा, you're done. Remind करते रहेगा. Including annual tests, including anything. Just put it on a reminder. Right? Good question. So my question was, so how do you approach team expansion and what criteria do you consider while creating different teams at different locations? Good question. लेकिन काफी broad है. Mostly speaking, it is all about nowadays how do we manage our funds. But let me tell you, India may be, if you are talking about a very senior engineering talent like a principal software engineer or somebody, compared to US, they are all more or less almost of the same cost if you want the smartest of the smartest. The only cost difference which India has is on from entry level to 5-6 years तक. उसके बाद नहीं है. जो smart है, they get paid almost the same as what they would pay anybody in US. Smart की price सब जगह एक price tag है. So most of the time it is like that. Some of the times it is like we will set up, say suppose in Bangalore, because we are going to get more data scientists, right? Abhi, I used to be here in Navi Mumbai only. There are many opportunities now here. I mean, we have got Loginex, we have got IdeaForge, we have got a bunch of teams. I think so Manisha was running Loginex, now she is doing another startup. So there are many of those basically ecosystems which have come up. But अगर तुम फाइनेंस की बात करोगे तो तुम बॉम्बे एंड इन अराउंड रहोगे फिनटेक में काम करने के लिए या बैंकिंग में काम करने के लिए. लेकिन अगर तुम ज्यादा डाइवर्स की बात कर रहे हो तो तुम्हें बैंगलोर, दिल्ली इन सब जगहों पे काम करने जाने का. Be very open to choose a location to get a job. Don't constrain yourself with a location, otherwise job मिलना मुश्किल हो जाएगा. Initial hump cross करो, then think about something else. Don't try to plan your life with your first move. Life has more to offer and you will learn as you go. But पहला move होना चाहिए. Crack it. And then move on. Maybe you might move on in a year's time. That's okay. But you will learn how to move on. Yeah? Like don't basically overthink your first move. What else? हाँ मनमीत बोलो. So, being in a company, you are a team lead or you are leading a company. Yeah. So if you face any challenges, like in the market, there are other companies coming up with the same ideas. They are giving a Yes. flash. Yes. Really hard. Like Canva to us. Okay. Yes. Within that section, how do you manage yourself also the pressure of it, and also incorporate your ideas and innovations towards your team, like discussion. There is method to madness. Pressure will only be handled through logical thinking. We need to know how we will differentiate ourselves. There is no need to copy the other. It is important to understand whom you are targeting. There is money for all in the market, right? Direct competition in very fragmented markets is highly impossible, but there is always niche which comes into play, right? So pressure
हैंडल करना is actually a collateral damage beneath of rising in the company. As an individual contributor, आप सबसे ज्यादा कम प्रेशर हैंडल करेंगे. So there are a lot of people in my company जो मैनेजमेंट ट्रैक पे थे, but they have gone on to the principal and distinguished track, individual contributor, जो क्योंकि उन्हें प्रेशर नहीं हैंडल करना. They are okay doing technology, design, architecture because you get similarly paid, more or less. MG track has more because it comes with more shit and pressure. But at the end of the day, pressure handle करना भी एक art है. And to handle pressure, you need to have passion for something else. How do I handle pressure? I handle pressure by running. I'm a long distance runner. So my me time is my long distance running. Every week, 21 kilometers on Sunday. Some short runs in week. Yesterday was 10K. So basically that's my mojo. You need to have your passion. कोई एक चीज काम के बाहर Monday to Friday तुम्हारे पास होनी चाहिए to look up. It could be drumming, it could be guitar, could be painting. कुछ भी हो, need to have 1 year. It could be as simple as, like one of my friends says, very simple, like he watches old movies here. Not the old ones, 90s की अच्छी लगती है उसको, तो वो रात को 90s की मूवी देखता है वीकेंड में. बस कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे पास जो तुम्हारा वेंट आउट करेगा सिस्टम, सो दैट यू कैन गो इन फ्रेश एंड टैकल एंड रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. देयर इज नथिंग इन एनी बुक जो तुम्हें ये सिखाया जाएगा. आई हैव फाउंड दैट इन रनिंग इट हेल्प्स मी. द मोर आई रन, the better I perform in the office because my annoyance levels are very low. If it goes for a week without running, my annoyance levels are very high. तो problem लाओगे तो मैं basically I'll snipe at you. It's like get your energy drained somewhere else and then deal with shit, because the shit is going to annoy you for sure, man. I'm telling you. There is very less people in the world who don't get annoyed with shit. Like somebody or the other will give up on it. I am also as vulnerable as anybody. Nobody is perfect. अगर है तो मतलब that's too good. But मैं सदगुरु को भी गुस्सा आ जाता है यार. छोड़ो, वो तो दिन भर ज्ञान देते रहते हैं, but उनका भी गुस्सा आ जाता है. Anyway, it was good question.